इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट अगस्त 2022 फिजिक्स के 12th एग्जाम को। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। 1 और 2 मार्क्स के लिए इससे पहले वीडियो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 यहाँ पे 3 मार्क्स के हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, explain Faraday laws of electromagnetic induction and also state the law used to determine the direction of induced EMF। So यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, पहला ही क्वेश्चन है यानी कि 13th जो क्वेश्चन है, Faraday's laws of electromagnetic induction। देखिए यहाँ पे Faraday का 2 लॉज थे, उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज फर्स्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू Faraday's first law, an induced EMF will be produced in a coil whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, and this EMF will last as long as there is change in magnetic flux linked with the coil। सिंपल सी बात हुई, जब तक कॉइल के साथ लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तब तक यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और जैसे ही उस फ्लक्स को हम बंद कर देंगे तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी वो भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे जो प्रोड्यूस होती है, ईएमएफ जो प्रोड्यूस होती है, उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी इस तरीके से फ्लक्स लिंक होने के कारण, उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। और इस तरीके से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे कहा जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर सेकेंड लॉ, ये क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो भी ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, इज directly proportional to the rate of change of flux linked with the coil। मीन्स हम यहां पे मैथमेटिकली लिखना चाहें तो वी कैन सिंपली राइट E is directly proportional to d phi by dt, where E, this is induced EMF, and phi, that is magnetic flux। So यहाँ पे और थोड़ा सा आगे चले और इसको वी कैन राइट, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ से हटाते हैं, देन वी कैन राइट E is equal to minus k d phi by dt। Now we used K here. What is this K? This K is constant of proportionality whose value in SI units is 1, and in CGS unit, keep in mind, its value is C। Now what is C here? C is, that is velocity of light। So if we want to write in SI units, so we can simply write that is E is equal to minus d phi by dt। This is the value of induced EMF in SI units। Now what was the question? In the question he asked state and explain जो भी laws थे, Faraday's laws, and the second part is which law is used, state the law used to determine the direction of induced EMF। कौन सा law है? So second law is used to determine the direction of induced EMF। कैसे? Because we used negative sign here, you can see it here, a negative sign is there। What this negative sign represents, or for what we are using this negative sign? So we can simply write this negative sign is used to tell
that induced EMF produced opposes the change in flux. Means in what direction we are changing the flux, the direction of induced EMF will be opposite to that. If we can further write here that if a coil have n turns, 3 नंबर के लिए यहां तक जो आपने लिखा वो सफिशियंट है, परंतु हम इस टॉपिक को यहां पे अब कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और कर लेते हैं. इफ ए coil have n turn, then magnetic flux linked, because it is for a single coil it is phi, and if there are n number of turns then it will be equal to n phi, and thus induced EMF that will be equal to E minus n d phi by dt. So this will be the induced EMF produced in a coil with n number of turns. And as I already told you that the current produced due to this EMF is called induced current. So this was the question for 3 marks, and this was the question number 13 for Saturday, August 2022, and for 14th question I am going to discuss in next video.